बच्चों, हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारी चीज़ें बता दी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि फिजिकल चेंजेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे कैन चेंज. Okay, so now come to the next topic, that is chemical changes. फिजिकल चेंज में आपने देखा था कोई भी नई चीज़ फॉर्म नहीं होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो सकती हैं, जिसमें कलर, साइज, स्टेट, ये सारी थी जो हमने एक्टिविटी करके आपको दिखाई. अब केमिकल चेंज में क्या होता है कि इसमें कोई नई चीज़ रेडी हो जाती, तैयार हो जाती है. तो इसमें देख लेते हैं केमिकल चेंज, दो चेंजेस इन विच new substances are formed and these chemical changes are also called chemical reactions. Example, curdling of milk. हम पहले बताते हैं आपको कि ये केमिकल रिएक्शंस होते क्यों हैं. जब ये केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि इसमें चेंजेस क्या होते हैं कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट करती हैं, मिलती हैं, तो एक कोई नई चीज़ बन जाती है, तो वही केमिकल चेंज बोला जाता है और उसी को केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं. तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध से दही का बनना. तो दूध अलग चीज़ है और दही, उसी से दही बन जाना, ये नई चीज़ है. अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर इनटू एश. यानी कि हमने पेपर को जला दिया, जलाने के बाद में एक नई चीज़ हमें मिल जाएगी, उसको राख बोलते हैं या ऐश बोलते हैं या कार्बन बोलते हैं. ठीक है, तो कार्बन या ऐश हमारे लिए नई चीज़ हो गई और इसको हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहा, आपने देखा होगा जिस पे पीली सी लेयर चढ़ी होती है, जिसको जंग बोलते हैं. तो पानी के कांटेक्ट में आके जब लोहा क्या है, वो एलोइस लेयर फॉर्म होने लगती है और वो धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, तो और रस्ट फॉर्म हो जाती है. तो उस वही चीज़ है रस्टिंग ऑफ आयरन. यानी कि लोहा अच्छा खासा था, उसके साथ में रिएक्ट किया पानी वगैरह और बना दिया, रस्ट फॉर्म कर दिया. ठीक. पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर. हम क्या लाइम वाटर ले लेंगे. लाइम वाटर कैसे बनाया जाता है पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया है. फिर भी एक बार हमने चूना लिया, चूने को पानी में डाल दिया और फिर उसको सेट होने के लिए रख दिया, और उसके ऊपर का पानी, अच्छा वाला चूने का पानी, किसी और बर्तन में रख लिया और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं. यानी कि सब क्या बन गया, नई चीज़ यहाँ से हमें ऑपरेट हो जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास करेंगे तो कोई नई चीज़ फॉर्म हो जाएगी. ये केमिकल रिएक्शंस है. क्यों क्यों कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, लाइम वाटर के साथ में, और आगे प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ और बना देगा. अब एक्टिविटी इसमें एक करके देख लेते हैं. कन्वर्जन ऑफ पेपर इनटू एश बाय बर्निंग प्रोसेस. यानी कि अब देखो, हमने ये पेपर उठाया और सिंपली इस पेपर को क्या किया, हमने, अब इसमें एक चेंज होगा, आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, नहीं तो आप बता नहीं पाओगे. ओके, अब देखो, ऐसे स्टिक लिया, हमने पेपर को क्या कर दिया, इसको बर्न कर दिया. हमारा काम हो गया. बस थोड़ा
थोड़ा सा बर्न करने के बाद में हमें क्या मिला इसमें, ये देखो किनारे किनारे से क्या हो रहा है, काला सा हो रहा है। ठीक, तो ये हमको इस पेपर से ऐश मिल गई। ठीक है, ये ऐश इस तरह से पेपर को जला देंगे। पेपर को जलाने के बाद में हमको क्या मिलेगा, कार्बन मिल जाएगा, राख मिल जाएगी। और आपने देखा पेपर, क्या पेपर पेपर ही रहा? नहीं, वो पेपर कन्वर्ट हो गया राख में। तो हमें पेपर से क्या एक नई चीज मिल गई, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हुए, बर्निंग हुई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक, सब्सटेंस बर्न हुआ और एक नई चीज बना दी। और नई चीज क्या है? ऐश, यानी कि राख। तो अब बताओ, which substance is new here? You can tell। क्या नया चीज यहाँ पे क्या है? नई चीज है ऐश, यानी कि राख। Dear children, today I would like to clear your concepts of chemical change, chemical reactions, and chemical equations. Okay, so what is chemical change? Chemical change, a change in which two or more substances, and those two or more substances you can also say reactants, combine together to produce one or more new substances. When two or more substances combine together or react together, they are called reactants and form two or more products. Okay, that have different chemical properties than the reactants. So, reactants and products. Those reactants are placed on the left hand side and products they placed on the right hand side. So, these reactant and product both are having different properties. Okay. Then it is called chemical change. A chemical change is also known as chemical reactions. For example, hydrogen and oxygen. There are two gases. So, these two gases when reacts together, when hydrogen reacts with oxygen, they will give two or more substances, that is called product. So, you can say in the left hand side H2 and O2. These are the substances which take part in chemical reaction. So, this is called reactant, and by reacting these two substances, a new substance is formed, that is water, and is called product. And these reactant and product, these are reactants and these are products, and both the reactants and products have different properties. Okay, now I will tell you one more thing, that is chemical equation. Now wait,
clear? I would like to make you more clear about these terms. Once again, that is chemical change, chemical reaction and chemical equation. Okay. So, we will learn first of all about chemical change. So, what are chemical change? As you know very well, but still you have to clear your concept about chemical reaction, chemical change and chemical equation. Okay, let us clear your concepts. First of all, we will take chemical change. So, what is chemical change? A chemical change in which two or more substances, or you can say reactants, combine to produce one or more new substances, or you can say products, that has or have different chemical properties than the reactants is called chemical change. A chemical change is also known as chemical reaction. So, this chemical change only takes place in the presence of chemical reaction. And now you have to clear it that what is chemical change. First of all, you should clear about these terms, reactants and products. What are reactants and what are products? I will make you more clear by taking an example. For example, this one is H2. Children, you know H2 is hydrogen. It's a symbol of hydrogen gas. And O2. O2 is the symbol of oxygen gas. So, when hydrogen reacts with oxygen, it will give a new substance that is called product. Okay. So, here this plus sign indicates the reaction, the combination of two substances. And these two substances, H2 and O2, which reacts, they are called reactant. Here it is written reactant. This one, reactant. When the substances which reacts with each other, they are called reactant, or you can say the substances which take part in chemical reaction and results in giving new product, that is called this reactant. Okay. So here what will be reactants? Hydrogen and oxygen. They are reactants. And here by these reactants a new thing or substance is formed, that is called H2O or water. Okay. So this water, which is product. Okay. So you can say in a chemical reaction or a chemical change, there are two parts. Number one, reactant, and another one is product. And that reactant takes placed in left hand side, and the product that is on the right hand side. Understood? Okay.
Now, once again, I'm telling you, chemical change will take place when two substances, two reactants combine and form a new substance, and those substances which combine together or react together are called reactants, and those substances which are formed as a product, that is called product. So the substances which are placed on the left hand side and react with each other, they are called reactants, and by reacting these two substances, they give rise to a one or two products, that is called product. Okay, one or two substances, that is called product. Now, one more important term, that is about chemical equation. Now, I am telling you chemical